how we can keep fit through our diet and exercises. So I've limited it to diet and exercises, and we'll discuss various aspects of all the dietary good things, bad things, what we can take, what we cannot take, what is benefit, what is advantage. So I'll try to discuss the details of that, and at the same time, a little bit on the exercises, tobacco, alcohol, sleep, water intake. So I'll try to cover as much as possible. But the main thing is that I'll have to go a little fast because this is going to cover a lot of topics. So in that case, I think. Okay, I will request Chandrashwar Khan Saab to just start the session, and we are very happy that Dean, ex-Dean of this AIMS, no, All India Institute of Medical Science, Dr. UK Badami Saab has come. Yes, Yegan, UK Badami is a very great man and very big man, and we are very happy that he is with us. And we have got, we have today three doctors at present, and some more doctors are expected to come. Dr. Sushil Singh, Dr. Jitendra Sinha, so many people are expected to come. So Good. I will request Chandrashwar Khan, Deshmukh Sahab has also come. So we are too much means, full of zeal and joy and pleasure also, and we are going to learn something today new. So Oh, good. चंद्रेश्वर खान साहब आप शुरू करवा दीजिए और आज Sure, का sure. सेशन It'll be my Grateful. honor. My honor. या Yes. No, for your grace in the race, and you are such a nice gentleman and so well expert doctor. I won't take much time because I know your time constraint and the planning which you have done. So, welcome, Dr. Mishra, uh, to this galaxy of people where Dr. Vadani is also there and other doctors. Mr. Deshmukh is here. And this is all the credit goes to Amitabh ji, who follow up in such a manner that nobody can miss it. We know Dr. Mishra very well. Dr. Mishra is not merely a very good physician, but he is a very, very good, जिसको ये बोला जाता है कि बहुत सहज, सुंदर, श्यामल और शुद्ध इंसान हैं. ये पीड़ा को समझते हैं और जो कोई भी दूसरों की पीड़ा को समझता है और वो संयोग से डॉक्टर है तो वो कितनी ऊंचाई पर जा सकता है, ये गए भी हैं. So without taking your plan and your time management, I know. So welcome to the galaxy of people, and this galaxy will be brightened by Dr. S K Mishra. So welcome, Dr. Mishra, Dr. Vadani, and our Ayurvedic expert, Dr. Saab, everyone. And now, Amitabh ji, over to you to ओके immediately सर start Dr. Mishra's session because his time अच्छा management is very, एंड very slow. and Dr. Okay. Mishra's credential is that Dr. S K Mishra MBBS honors, MBBS honors, and PGDMCH medical consultant, National Health Mission, Government of Jharkhand, Ranchi. So he is very experienced, and I will. In the meantime, I will request. We will expect a few words of Dr. Badami also, who has devoted his valuable time from AIMS. He had come. I had gone to AIMS also. I had seen that how much busy he remains. And जोशी साहब के इंफॉर्मेशन के लिए बता दें मैं बडानी साहब has done in Bipar mentoring, SAT, and one more course also. We have conducted for doctors of AIMS in Bipard, and also we have conducted so many I have conducted personally so many programs, motivational programs in AIMS. So, and once Dr. In motivational ethics value class, Dr. Badami had promised that हम एक काम करेंगे. सभी से हमने प्रॉमिस लिया था कि एक ऐसा काम करिए जो आपने पहले नहीं किया है. तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने एम्स में 1000 ये प्लांट मैंने प्लांट लगाऊंगा. और यो 1000 की कौन कहे,
वहाँ पे उन्होंने एकदम फुलवाड़ी कट करवा दिया है। हम उसको उनको स्पेशल मतलब उतना सुंदर एम्स का वातावरण ही उन्होंने बदल दिया। और प्लांटेशन करने बने हजार हजार क्या 10 गुना उन्होंने वहाँ पर प्लांटेशन लगवा दिया। और उसका फोटोग्राफ वो भेजते रहते हैं। अब तो उसमें सुंदर सुंदर फूल भी निकलते हैं। तो मैं बडानी साहब से भी 2 मिनट सुनूंगा और उसके बाद एस के मिश्रा साहब का सुनना शुरू करूंगा। सो बडानी साहब, यू आर स्पेशल गेस्ट टुडे। A.M. Prasad is the chief guest, has not come yet, he is IRS. तो हम बदामी साहब से 2 लाइन सुनेंगे जिससे सब लोग हमारे बड़े बड़े। अच्छा, ओंकार नाथ उपाध्याय हैज ऑल्सो कम, इज प्रेसिडेंट ऑफ जन जागरण समिति। ओंकार नाथ उपाध्याय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सब बड़े बड़े लोग आ गए हैं। तो हम बदामी साहब का 2 लाइन सुनेंगे। और बदामी साहब के साथ हमने दूरदर्शन में भी प्रोग्राम दिया है और वो बहुत फेमस हुआ है। तो बदामी साहब। नमस्कार, धन्यवाद अमिताभ जी। जो आज का विषय है कि स्वस्थ कैसे रहें, हम सुनेंगे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर एसके को। और स्वस्थ रहने के लिए जैसे अभी हम जब मेंटरशिप का प्रोग्राम कर रहे थे बीपाड में, तो जैसा कि अभी अमिताभ जी ने बताया कि सब लोगों को एक वायदा करना है कि हम कोई अच्छा काम करेंगे। तो मुझे लगा कि बहुत सारे काम पता नहीं मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। उस समय हमारा एम्स रेसिडेंशियल और एम्स का कैंपस में पेड़ पौधे बहुत कम थे। तो हमने सोचा कि 1000 पेड़ लगाने का हमने वायदा किया था और अब 10 सालों में लगभग 3000 से ज्यादा पेड़ आप लोग अगर आएंगे हमारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में और एम्स में भी, वो विभिन्न इनके वन विभाग के माध्यम से हमने लगाने की कोशिश की है। और एक तरह से ये हम अपना कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन वापस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो हमें करना चाहिए, पेड़ पौधे को बढ़ाना चाहिए। और दूसरा हम कहते हैं कि हमें फिर से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है। तो हम कहीं जाएं, जेब में या बैग में एक थैला रखें कि हम कम से कम अपने लेवल पे प्लास्टिक का उपयोग कम करें। और तीसरी चीज, अभी तो हम स्वस्थ कैसे रहें, मैं केवल एक ही चीज बोलता हूं कि हम चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे। मतलब कोई ना कोई एक्सरसाइज पर डे अगर करते रहें तो हम स्वस्थ बने रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ स्वागत है आज का मेन लेक्चर का, जिसकी जानकारी देंगे। और धन्यवाद अमिताभ जी हमें जोड़ने के लिए इसमें। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। काफी है आज शाम के लिए और आगे के लिए। स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद सर, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। और डॉक्टर SM भट्ट साहब भी बोलेंगे कि हमको क्या क्या डाइट लेना है अगले वीक। उसमें भी हमने स्पेशल गेस्ट बदामी साहब को बनाया है और हमारे मिश्रा साहब भी आएंगे। तो मिश्रा साहब, अब आप तो शुरू कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। इट्स अबाउट 7:17, सो आई ओके propose to सर। speak for about an hour or little more, and ओके then सर। we'll have interaction, because ओके this सर। this is going to raise a lot of questions, so I'll expect ओके all of ओके you to interact also. So ओके। we start today's session. If my request would be to mute everyone, so that we can, if there are any questions, we can have it in the chat box, but that will actually keep the whole thing very clear to others. So thank you very much for giving me this chance to share my views on this beautiful platform with so many learned people, and I really feel small. I thank Khan Sahab for the kind words he's spoken for me. Thank you, all others, and Umeshji and everyone. So I'll start today with that, and that everyone knows since class 4 or 5 we have been reading about the good diet, bad diet, a lot of food, fruits, vegetables, and then so all those things, vitamins, micronutrients. We have been reading about that. We have been taught in the schools level, and every teacher, every parents, everyone says that okay, you should have good food, good balanced diet. So I'll go a little bit of detail of why it is important and how it works. So that will create some interest, and you'll appreciate why we are talking so much about that, because that forms an important part of lifestyle. And if we go a little bit of history of that, so men came on this planet
several lakhs of years ago. And then that time it was actually hunter gatherers diet, and hunter gatherers diet means everyone has to wake up and then chase animals and then kill them and then eat them, and it used to be a daily affair. This was very interesting because men or human beings, they are actually diurnal animals, and most of the animals in the forest, they used to be nocturnal animals. So men would wake up early in the morning, full of energy and vigor, hunger also, ready to chase the animals. At the same time, the animals would be tired by the activities all the night, chasing their own food. So this was a part of food chain, and it would happen that it was easier to chase those tired animals, but still the animals, they gave a good fight. They ran for several hundreds of meters or maybe sometimes kilometers also before they got trapped by or caught by the men. So it was a part of the contest for life. So whoever lost, he actually lost the life. That is how it would work in those days. But the best part was, since the men would chase the animals, so men would be lean, and the animals or the prey that were being chased, they also were lean, because there was no chance of collection of any cholesterol or fat on the body, because it was very important that they both ran, and running actually cut on the bad fat or the cholesterol and other things. So the men actually ate quite healthy food, fresh food. However they ate, but that is how they would survive. They would consume fish, they would consume seafood, bones also would be eaten, and then since they had less of fats, so this is how it worked. Now, men being men, they had a lot of brains, so they discovered agriculture. That was about 10,000 years ago. It would be maybe a few years this side or that side. But they learned how to domesticate the animals and use them for their own purpose. Now, see the intelligence of men. So they started farming, and this was a great landmark in the human development, because once we started farming, we started growing food grains that could be stored. Now, contrast that with what they used to eat earlier. Every morning it was kill to eat. Now, this time it was not kill to eat. So they would put in their efforts to grow the food, to grow the food grains, and then they would keep them in the silos and store them, and would eat them all the year around. This made them a little bit lazy, because the agriculture work was largely dependent on the rains, and it did not require much of the efforts, because they would just throw in the seeds and they would grow up. So maybe a couple of months of effort, and they would just sit and enjoy the food all the year round. At the same time, this farming also created different classes of workers. So those who made the agricultural tools, they were respected more, and they would be given rest and leave much more compared to those who were actually working labor barehanded. And this was a kind of crude work they would do, so they would hardly get any recognition for their efforts compared to those who made pictures, those who made agricultural tools, and things like that. So probably that started the class, and this class creation may have been because of the farming. That said, it further moved into low physical work, and this was augmented still further by industrial growth, which was 1780, and that onward, even the little bit of physical work people would do, that also got a little slowed down. So automation came in, and that led to different kind of food materials to be eaten, and one of them was processed food. Processed food means canned food or processed food, which could be stored longer. Even the raw food could be stored longer. And then physical work again went down further. So see how we developed. We started with chasing animals and ended up growing things, and not moving much, and sort of becoming lazy and creating a kind of lifestyle which led to a variety of problems. We'll come to that later. There was actually potato famine last century, and that led to eating sugar, a lot of sugar, and that was starch and fat and everything. So more of diabetes. Then during World War time, the food rationing was there, so we had less of diabetes. Now, if we consider the daily diet is
is to be considered in terms of energy expenditure. Now, there is something called resting energy expenditure. Resting energy expenditure is when we how much we require the energy on our day-to-day basis. For males, it is 900 calories. I guess most of us are here aware of calories, and calories contained by different food materials and food items. So, for males, resting energy expenditure is 900 plus 10 times the body weight in kilograms. So, someone who is 50 kilograms, it would be amount 900 plus 500. So that would be about 1400 calories per day. Now, for females, it would be 700 plus 7 times weight in kg, which would be again someone with 50 kg, a woman 50 kg. She would be requiring 700 plus 57 jar. So it would be 1350 or something close to that. Now, it is increased in cases of, different physical activities, and during pregnancy the women will require more of energy and things like that, or those who are sedentary workers, they'll require less of energy. Those who are moderately physically worker, they will be requiring more of energy. There is something called BMI. When we say BMI, this is body mass index, and this is calculated on the basis of the weight in kilogram divided by height in meters squared. So it should be about 24, 25, and anything more than 30 is obese. Obesity is also measured in terms of waist to hip ratio. So waist circumference and hip circumference, they should be almost same for males and little less than one for females. So this is how we measure the obesity. Now, when we eat, what happens? We eat a lot of things, of which the major component is carbohydrate in Asian countries, especially. In developed world, it is more of protein and a little bit of carbohydrates, a little bit of fats. But in developing countries, especially Asian countries, all the entire subcontinent, we have carbohydrate based, especially rice based food. And the moment we eat rice or carbohydrate, any form, wheat, rice, whatever, sugar, so it gives a spike in the blood glucose level. And any spike in the blood glucose level will start creating a state in the body which is called inflammatory state. Inflammatory state means body system is overactive, overheated. That is how you can explain it. And once it is overheated or overactive, it generates a lot of free radicals. Now, those of you with some bit of science background would appreciate what are free radicals. In simple terms, if you see bleaching powder, we use it in our day-to-day basis. So it has free radicals, and the moment you spread it on the floor, it cleans up immediately. So what it does is kind of burns up the areas and cleans up the entire thing. So free radicals, once they are generated, they start burning up. Now, this is not for nothing that the body generates these free radicals. Actually, free radicals are meant to kill the microbes. We eat everything, and some of them are raw. For most of the thing, we have acid in our stomach, which kills them. But if we eat something which is uncooked or raw, for that we need the free radicals. So it has got some purpose. It's not just it's being thrown into the body. Now, free radicals in excess can be created by way of, smoking, tobacco, stress, environment, pollution. So all these things, they can increase the free radicals creation in the body. And free radicals, as you appreciate, it will burn up the system. And this is no good for the body. So we have to avoid free radicals. And for that, I'll come later, how we can avoid it. So we now know that if it is in excess, it will create early aging. Cancer also can be created, DNA can be changed, and then the body system will have atherosclerosis, which is a kind of fat deposition inside the blood carrying pipes of our body, the blood which is carried to vital organs of our body. So they can get choked because of fat deposition. And then, of course, Alzheimer, which is a dreadful disease. Most of you are aware of Alzheimer disease, which is essentially dementia and many other things. So all these things can be created by the free radicals. Now, once we have food
the system generates free radicals, but if there is a load of sugar or lot of sugar in the blood, which is called hyperglycemia, in that case the free radicals are generated and they start damaging the body. This has to be understood very clearly, because as long as the sugar is high in the blood, it will continue to kill major organs or most of the vital organs in the body. And this is the major the side effect or major pathway by which diabetes is causing disease, causing damages in the body. So it takes a lot of time, but very systematically it damages the body, and you know the reason. Now we have to understand what is glycemic index. Glycemic index is, capability of releasing or raising the blood sugar of different by different food items. Now we have different kind of food. So some food which is calorie dense, some food which is calorie dense means which will give you a quick rise in the blood glucose, because it's serious, it straightway goes into the blood and gives a spike in the blood sugar, and then it causes the free radicals and other things that we just discussed. It also brings down the good cholesterol, and also it increases the bad cholesterol, especially the triglycerides. So the calorie dense food, they give a sugar spike, which is not good for the system. Now if we take a low calorie food, low calorie food can be whole grains, wheat, brown rice, millets, barley. So they all are essentially dull colored food, dull colored carbohydrates, which have a lot of ways to release the sugar slowly. They all have sugar, but if they can stagger the release of sugar in the system through the fibers, we'll come about the fibers again, but fibers essentially will stagger the release of blood sugar, release of sugar into the blood, which will cause less of damage. That is why we insist on having a lot of fibers in the food, daily food. At डॉक्टर the साहब same time, थोड़ा सा हिंदी भी मिला के, डॉक्टर एक ओंकार उपाध्याय जी हैं, उनको हिंदी चाहिए, थोड़ा सा हिंदी। देखिए, मेरा मानना है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बहुत समृद्ध हैं। तो आप अगर कहें तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा, लेकिन अगर दोनों मिला दूं तो दोनों भाषाओं के साथ अन्याय होगा। तो आप बताइए, अगर आप बोलेंगे तो मैं हिंदी में बोलूंगा। सरस्वती की कृपा है, मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, और मैं एक शब्द अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो आप लोग अगर तय कर लें तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा, पर ये दो नहीं कर सकता हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये अन्याय है दोनों भाषाओं के साथ। अच्छा, आप लोग तय करके बोलिए कि क्या करना है। नहीं तो ठीक है, इंग्लिश मैं दोनों में ठीक से बोल सकता हूँ, कोई मेरे साथ परेशानी नहीं। मैंने दूरदर्शन पे भी काफी कार्यक्रम किए हैं और शुद्ध हिंदी में मैं कार्यक्रम करता हूँ, और मेरे कार्यक्रम काफी सराहे जाते हैं। तो आप लोग तय कर लीजिए, अगर हिंदी में बोलना है तो मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बदामी साहब क्या करना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश? आप लोग तय कर लीजिए। बदामी साहब, हिंदी या इंग्लिश? आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए माइक को अनम्यूट कीजिए। माइक आपका म्यूट है। हाँ। ये एक्चुअली देखिए, दर्शक अगर अंग्रेजी में समझ रहे हैं सारे लोग, तो इनका फ्लो और बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर वो तो खुद तैयार हैं डॉक्टर साहब कि हम हिंदी में भी बोल सकते हैं, तो मेरे लिए तो दोनों भाषाओं का उतना ही अच्छा से समझ भी है और जानकारी भी है, लेकिन मेजॉरिटी जिसको बोलेंगे उसी में ही करना ठीक रहेगा। ओके, तो ठीक है सर। मुझे लगता है अगर आखिरी में जब हम लोग इसके बाद जब इंटरैक्टिव सेशन करेंगे तो उसमें हम लोग बातचीत कर सकते हैं अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक। ठीक है। अगर कहीं पर किसी चीज को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो इसमें भी डाल सकते हैं और अंत में उसको
थोड़ा पूछ भी क्लेरिफाई सकते कर हैं, लेंगे, यस। हाँ, वो पूछ ज्यादा, भी जी जी सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो मुझे बातें लगता है बता वो अच्छा रहे हैं रहेगा। वो हाँ, हमारे प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम्म है या क्यों फाइबर खाना चाहिए। तो अगर ये हम्म। मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा या कुछ दिक्कत लग रहा है तो उसको लिख टेक्निकल के रख लें, टर्म्स में, तो अलग तो से लिख वो के रख लें। उसके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, वो ये लिख नहीं, के ठीक रख ये रहेगा। देंगे यही या ठीक, उसमें यही टाइप ठीक कर है सर, देंगे, तो यही ठीक है। उसमें हाँ हम लोग बात करेंगे। Because हाँ, ठीक है, क्योंकि ये ये ठीक रहेगा। glycine index and ये triglyceride, they can be transferred, translated into Hindi. So I think let him speak as such, but in the interactive हाँ, section वो we can जो discuss. बहुत टेक्निकल है मुझे उसको लगता है वो थोड़ा अच्छा सा रहेगा। बाद में है। एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे लोगों के समझ में आए। और आप भी अगर जहाँ पे उचित समझे एक दो शब्द को आम भाषा में बता देंगे, मतलब उसके लिए फ्लो को कम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, चल डॉक्टर यही साहब है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू। थैंक यू। English will be more So acceptable. I was हाँ, हाँ, talking about, kindly देशमुख mute जी करें। yourselves. I was talking about low glycemic index food and then high glycemic index food. So high glycemic index food has no bran, fiber, or nutrients like white rice. They are processed. Now, processing actually steals away the precious outer layer, the bran or the husk or the covering of it, which has micronutrients also. And that actually looks very good, very attractive. And the food prepared using that kind of rice, it is very appetizing and it appeals to the tongue and every senses. So the same way, white sugar is also same way loaded with calories. So such new carbohydrates are empty calories. And apart from that, you have sugary drinks and many other things. We'll talk about junk food also later. Now, coming to the fibers and starch. Now, fibers actually they are broken down by some good microbes inside our intestines, and they are converted into short chain fatty acids. I don't go into details, but they are good short chain and fatty acids, and they are acetate, butyrate, propionate. They are made by gut flora, the gut microbes. Now, butyrate, it is used as an energy substrate and it improves the mucin. Mucin is the slimy substance which drives away all the bad things, especially in the nasal cavity. The system inside the nasal cavities, there are small hair, and then at the microscopic level, there are what we call cilia. And there is a layer of slimy substance which traps the pollutants or the particles in the air, and that traps, and that is not permitted to go into the more sensitive areas of lungs, the last point, the alveoli, where the gaseous exchange takes place. The oxygen comes in contact with the one layer, one single cell layer, and from there the oxygen gets into the system. So the particles, the big particles, especially more than 5 micron particles, they are all filtered at this level. And the smaller ones, they get stuck into that slimy layer, the sticky layer, which we try to clean up every morning. When we wake up, we blow the nose and we see all the dirt of blackish color. The more polluted areas we live in, the more of blackish color the slimy phlegm will come out. So it helps in preparation of that slimy layer. So that is again a good thing. And apart from that, it is prepared in the lining of stomach also, which covers the lining of stomach, where the lining of stomach is protected by this sliming layer from the acid which it produces. So that again has an important role to play. Then also it is anti-inflammatory and antioxidant. Now you understand what is antioxidant, because free radicals can be quenched using this. And then acetate, that is another short chain fatty acid that actually helps in propulsion of food. Propulsion is milking movement. So the way we milk the cow, the gut movement is unidirectional, and it actually propels the food material, the digested or undigested food material, both. So the acetate helps in propulsion or forward movement of the food for the due processing, including the uh, last part, after which we defecate and the ebullitions are there. So the stools come out. So if there are good amount of acetates, then that will help in
forward movement of the gut or the intestines, and we'll have, in simple terms, we'll have good digestion and no constipation, good bowel movement. Then again, we have short chain oligosaccharides. They are found in nuts, seeds, onions, garlic, watermelon, legumes, grains, whole grains. So they are short chain oligosaccharides. Now you understand what is the fiber and importance of fibers. Fat, so I'm not going into the detail, but the amount of carbohydrate that we must take should be related to our energy expenditure or energy requirement. If we have diabetes or other things, then it has to be calculated by your treating physician. And then accordingly, you must take the carbohydrate as whole grain. Whole grain, if you can have 7 grains also. You mix the grains and then make it so that you have more of fibers. You know the importance of fibers now. Now we come to the fats. So it should again constitute not more than 30% of our daily meals. And the in one simple term, if we say, then those fats which freeze at the room temperature, they are not good for our health. Now, in simple terms, if we take, ghee or butter or coconut oil, so these things, they normally they freeze at the room temperature most of the year, and they tend to deposit inside the blood carrying pipes of our body, and they narrow down those pipes. And narrowing down the pipes will lead to variety of issues, including heart attacks or stroke or eye problem or kidney problem. So that is to be avoided. So we should have more of mono unsaturated fatty acids, and uh, less of saturated fats. Saturated fats, as I've said, those which freeze at the room temperature. So polyunsaturated fatty acids, they are found more in the sea fish like salmon, tuna, sardine. They are very rich in the polyunsaturated fatty acids. So they are very good for the health. So it must be consumed more and more. The Mediterranean people will come to that. They have more of these fish and the olive oils, so they are healthier compared to us. Then again, trans fat, which is vegetable oil, it should not be more than 7% in our fried Indian food. Now, trans fats, you understand why they are used. They are used for three reasons by snack makers, the samosas and other things. Because number one, it gives a very good flavor. If someone is cooking samosa, it is very difficult to hold your tongue and say no to it. Other thing is it increases the shelf life. It can be kept all the day without much problems. And the third one is, of course, it is very tasty. So it should not be more than 7%, and if it can be avoided altogether, is better still. So the abdominal fat, if it gets deposited in the abdomen, then it causes high cholesterol. It may cause BP by pumping out a lot of cytokines or the chemicals which is released into body, TNF, cortisol, free radicals. It may lead to insulin resistance. So the fat deposited in the tummy, the big belly, that is kind of toxic waste, and it should be avoided at all costs. Now, it may appear as a sign of affluence. Those who earn, they have big bellies and they are appreciated by the society. At least not these days, but earlier times, our fathers and forefathers, they would actually look at the tummy and say, okay, this man is doing well in his life. He's earning and he's supporting the family and he's looking fat and fit. So that was the sign of success and affluence, but no longer. People have become more aware. So abdominal fat is active. It is invisible, but it can be reduced by exercises and by dietary restrictions. So that much about the fats. Next, we come to the proteins. Proteins, they act as building blocks. Now, proteins are the major things which actually build the body, and they are required in making various chemicals inside the body for the day-to-day running.
including hormones. Most of the hormones, they are also protein. Insulin is also a protein. So it is needed for growth, for muscle mass, and for immunity. The muscle mass is where most of the carbohydrate is burnt. So it's a kind of oven where the carbohydrate is burnt to create energy. Now, if you have less of muscle mass, you may have good insulin, but still the muscle mass, if it is less, then you will have accumulation of sugar inside the blood. So the muscle mass has to be good. It should be substantial. You must have heard about some people developing diabetes at the age of 70, 72. That is because they are not moving much. If they are not moving much, their muscle gets thinner, and thin muscle will lead to high sugar in the blood. So about 100 to 150 grams a day of protein is a must. Then we come to the what contains most of the proteins. So nuts, we say go nuts. Literally, you should go nuts. All the nuts, they are rich in the proteins, like almonds, walnuts, cashews. They are rich in fiber, proteins, and good fats also. Fish twice a week. Sea fish, as I've said, they are preferable, and it must be baked in a different manner. I'll come to the cooking part. So it should be baked or cooked in less of oil. Beans, those who are not consuming animal fat, animal protein, they are advised to take beans, pulses, soy, tofu, and things like that. Now we come to the unhealthy eating, the junk food. Junk food has taken over last at least 50 years. The kitchen has been waning and fast food has been gaining. Now, I've heard some of the youngsters telling me that in Bangalore and places like Gurgaon, they are having apartments which has kitchen optional. So they have actually opted out of kitchen altogether because they don't need to cook. Most of the food is available through online orders. So the fast food is very easy to get because it reaches your doorstep very quickly. You don't have to put in much of the efforts for that, and then at the same time, uh, it gives it gives a lot of difficulties in the system. I'll come to that. Great flavor, easy reach, and because of this, the calorie intake in the last 30 years, that has gone up by 250 calories per day additional, just because of online orders and getting good food and good delicious food, the junk food. What it contains is Dr. Saab, uh, Dr. Jitendra Sinha, MBBS, has also joined, and oh, good, good, welcome. in addition to Yakshadaj, Director General, IAS, Mr. Karl Shetty Saab, he has also joined. So many Oh, scholars have come. most We are welcome. lucky. Most welcome. I'm a very Welcome. small man trying to share my ideas. No, Most no, welcome very good. aboard, and please give a good listening, and after that we can have interactions. Very good. So Vidyanath Jaji, welcome. so why we are against the fast food? For a simple reason that they have high fructose, the calorie dense, they have empty calories. They have a lot of fat because in preparation they use a lot of oil. All the bad oils are used, and then they can use corn syrup also, which is again rich in calories. They have a lot of salt, high salt, because they have a lot of shelf life. They have to keep a shelf life. It has to last day long, so they put in a lot of salt. Nitrites are used to give flavor, Ajinomoto and things like that. Now, all this they cause low leptin. Leptin is a there are two hormones in the system. One is leptin, another is ghrelin. So one actually is released once you reach the satisfaction level. It hits the satiety center inside the base of brain, and the brain tells the mouth and the system not to eat further. And part of it has to do with the stretching of the stomach wall. In simple terms, when the stomach is full,
it sends out a signal to the brain that, okay, no longer eating, I'm full. Since this calorie rich food, they are small in quantity, they are dense, they fail to initiate this system, which leads to eating, further eating, eating, and further eating. So the sensors are blunted. The brain doesn't sense that enough of calorie has been taken in because there is no fiber. The volume is less. The stomach is not stretched. That is why the fast food will give you a lot of signals to go on eating. This suits the fast food seller also. Their share prices, they go up madly. And what we lose out on is taking extra calories. Now once we start taking extra calories, the energy level, the glucose level goes up, the inflammatory state is kicked in, and then we first thing to go is sleep, so we lose out on the sleep. Now we think of the youngsters who work all the night, or who keep eating all the night all these junk food. They lose out on sleep, their hormone system is disturbed, and they have bad health because they're not getting proper sleep. At the same time, they're getting a lot of calories, and the obesity sets in, insulin resistance goes on, metabolic syndrome starts. So all these are closely linked. It's a kind of domino effect. So gradually one triggers another, and this is how the bad health and the things start. We we come to uh, we come to know about many of such small news pieces where youngsters are reported to have lost their lives in gyms and other places. Most of the time we have seen that these youngsters who have worked, who have lived a very unhealthy lifestyle, and they have gone, suddenly someday they wake up after maybe 10 years or 15 years of abusing their body and system. They suddenly decide that no, it's time to quit all this and then go to gym, and they go there and start overdoing it, and most of the time it ends up in a disaster. So this is very important to understand that junk food is not going to help anyone. Then what is healthy eating? Healthy eating is, in simple terms, balanced diet eaten properly. I'll come to a little bit of more detail on this. What we say is, don't dig your grave with knife and fork. So if you eat sensibly, you live longer. Don't dig your grave with knife and fork. Short meals for longer lives. So instead of having three big meals, it would be better to have six small meals. Eat to live, not the other way. Stomach is not a waste basket, waste bin. So it's not a waste basket. Now, portions should be small. Frequent meals means you have to divide the calories into equal portions so that it is spread equally all over the day. For the reason I told you, you cannot have a huge meal early in the morning and then have a huge spike for 2 hours, killing all the system. And after that, you realize that, okay, I have filled up myself for the day. I can go and work all the day and have the next meal in the night. No, no fasting, no feasting. It has to be properly. Respect to the system. The system is meant to feed you all the day, smaller meals. Then we talk about the food platter. A 9-inch thali should have lower half full of greens. Upper half, one half should be protein, which would be fish, chicken, or soy, or paneer, whatever it is. And then the other half, which will be essentially 1/4 of the platter, would be carbohydrates. This is a simplified way of understanding. And the diet should be rainbow diet. Put in as much of color into your diet as possible, which is carrots, which is sorghum, which is beet, which is green vegetables. All those things should be accommodated in the diet, in the platter, as much as possible. Eat in company. This is again very important. Eating in company is very important. Do not eat alone. Last time also I discussed about this. Once you are eating, sitting and eating alone, if you are alone, then
in the unlikely event, in the unfortunate event, if you get choked, then you should have someone around you who can identify you're choking, and he can do some maneuver or at least call for help. But if you're eating alone, then it becomes very difficult. And that's why I always advise that if you're actually eating alone, then you should keep the door open, have a glass of water, have a phone by your side, a bell by your side, so that you can press it before you start choking. Someone can rush to help you. So this is very important. Eating in company. Chew and relish. Chewing and relishing is again equally important. Chewing properly will put less load on your digestive system, where the food is being processed into smaller, finer molecules, from where it will be absorbed into the system. So if you chew it, you'll make the life of the lower part of digestive system easier. At the same time, as we grow old, the teeth, their enamels, they get sharper, and you can get your tongue bitten or the cheek, inside of your cheek, bitten more often. So if you eat carefully, give time while eating, then probably you'll be getting less of injuries inside your mouth. That is second one. Relish, I'm saying, because see, anyone who prepares food takes about couple of hours, not less than that, to prepare. And it is very, very savage and rustic to finish the food in 2 minutes. Most of us, we say that we are running out of time, so we eat like animals, and finish off and then drink the water and run away. This is very unfair to someone who has cooked. I especially mention the spouse who has spent 2 hours cooking something which you kill just in a couple of minutes. This is disrespect to the food and the person who has prepared the food. I'll come to the cooking part also. I have got some minutes on that. Then try to eat a lot of salads before you actually get to the main course. Have lime juice, salad, so that you fill up most part of your stomach. Stomach gets stressed, the signals start going up. So you should prepare accordingly that. There is something called danger zone of food. 8 to 60 degrees is the danger temperature, danger zone of temperature for food, which means hot food should be eaten hot, cold food should be eaten cold. Ice cream should not be eaten after 8 degrees, and food which has been cooked should not be eaten less than 60 degrees. And this has got a reason, because 8 to 60 degrees is the ambient temperature at which microbes grow. The food deteriorates. It might give you upset stomach, gastroenteritis, and many other things. So avoid eating food which has been kept at 8 to 60 degrees, which is basically the temperature in our country or in various parts of our country. So avoid the danger zone of food. Then cut on the salt, canned, preserved, or snacks food. Sugar, again, it has to be avoided as much as possible. Sugary drinks, they have to be avoided. Honey, fruit juice. Fruit juice and fruits, between the two, there is a difference. And if I've explained it properly, then you'll appreciate what is the difference. Difference is the fibers. If we take fruit juice, you are taking only carbohydrate or sweet part of it. Most of it, during the process of grinding or crushing, they have gone away. You have discarded the fibers, the best part of it, and what you're drinking is pure sugar. If it is canned fruit juice, then it has preservative and more of sugar added also to give it a more taste. So in that case, again, you'll have sugar spike. So avoid fruit juices, have fresh fruits. When to have it, I'll tell you. Mediterranean diet that I was mentioning, the people in around the Mediterranean Sea, Spain and places like that, they have been reported to have less of cardiac ailments, largely because of their lifestyle. And what is their lifestyle? They take a lot of fruits, vegetables, whole cereals, whole grains, seeds, nuts. They use olive oil, cheese, curd, fish, seafood, and they're physically extremely active. So it was found that Mediterranean diet was more suitable if you want to avoid the cardiac ailments. A lot of work has been done in that. Then we come to the food hygiene and safety. Those who are handling the food, they should have their nails clipped very regularly. Anything under the nails
They are not visible, but even if they are visible, they can create a lot of havoc inside the stomach because they can lodge a lot of microbes and germs and parasites and spores, and they can upset your stomach. If it is hookworm and things like that, it will cause anemia also. Hookworm, of course, it goes through the foot, but other like ascaris and others, they can come inside and they'll give you a lot of vitamin deficiency and all. So clipping the nails, those who are handling the food, they must have their nails clipped very regularly. The skin must be free of any diseases, and the hair should be tucked while cooking so that it doesn't fall into the cooking material. Hand wash is very important, and the hand wash, if you can see properly, it should be done under the running water if possible. Otherwise, someone should pour water with a mug, use the soap, rub it like this, like this, like this, like this, like this, then the thumb and the wrist, both wrists, and then the water should be poured on top so that the water cleans and drains down the elbow. After that, the elbow should not be, or the hand should not be brought down, because then again the dirty water will trickle down it onto the fingers and the business end of your hand. So the hand wash has to be done properly. Several reports have suggested that hand wash singularly can rule out or can eliminate infection rates by about 30%, which is a substantial figure. So hand wash, again, I'll show you. Soap, rub it like this, 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 water poured on it, cleaned, and then it has to be dried up like this. Don't try to use any dirty towels to dry it up. And then you start handling the food. So the food has to be respected. Washing items which have to be eaten raw, they have to be washed very properly. If possible, use potassium permanganate solution to wash it very clearly, because spores of different parasites, they lodge on the skin of many of the like cucumbers and other things, salad leaves and all. So they have to be cleaned up, scrubbed and cleaned up in this running water properly before they are eaten. So all the raw food eaten or the vegetables, they must be cleaned up very properly. Then different knives for different chop boards for meat or chicken or fish. Because the mutton, raw mutton or chicken or fish, the knife which you use for processing or chopping or cutting, the knife and the board, they have to be immediately discarded and removed from the place. The same knife and board should not be used for onions or other vegetables, because there is a different mechanism and it might again cause a lot of difficulty and diseases. So the handling of raw mutton is to be very carefully done, and hands should be washed after handling that kind of material. Slow steamed cooking is preferable. Boiled, grilled, roasted cooking is preferable. Use less of oil, and oil should be preferably olive oil, and it should be cooked slowly so that the nutrients are preserved. Then fire safety while cooking is very important, and fire retardant aprons should be worn, especially by the elderly people who are into the kitchen and trying to cook something. These have to be followed very, very essentially. The things should be available, the emergency number should be written there. Then separating kitchen waste from others, again, it is very important, because lots of you, well, many of you will understand that biogas and other things are being prepared for other uses using these kitchen waste. So wet and dry waste have to be separated. That much for the food cooking. Healthy eating. Now, gut is sensitive to emotions. In our country, eating is not a process, it is not a necessity. In our culture, eating is a religion. If you go to someone's place, he'll offer you tea, snacks, whatever, irrespective of what you have eaten. And if you decline it, then possibly he'll feel very hurt. So eating is a kind of religion in our culture. You cannot say no to anyone's tea or maybe sharbat or whatever it is. Gut is very sensitive to emotions. So you may have low appetite when you're sad, when you're anxious, when you're gloomy.
You are not expected to enjoy a meal or have food while someone is putting a gun on your temple. Likewise, if you're very happy, you might feel a lot of appetite. So digestion and assimilation along with appetite, they all are affected by the emotions. Light lunches, early dinner, they are helpful. Light lunches means you have to, as I've said, frequent small meals. Early dinner, because of various reasons. Number one, if you do early dinner, you will have lot of benefits, like you will drink a lot of whatever drink, whatever water or coffee or milk, chach, whatever you have to have, please finish it everything by 7:30 to 8, so that you still have 2 hours left, during which you can go and evacuate yourself. Your urination process will be over, so you can sleep peacefully in the night. Otherwise, if you are going to bed at 10:30 and then have a glass of milk or chach or coffee or whatever it is, then essentially you'll trigger off the urination process in the midnight, which will disturb your sleep. This is a very simple logic. Apart from that, those who are having prostatic issues, they are advised to finish off all the eating by 7:30. So uh, early dinner has its own benefits. There are other benefits also. If you sit after dinner for 2 hours, then those of you who have lax valve between food pipe and the stomach, they will have a lot of benefit. I'll tell you what. There is a valve between the food pipe and the stomach which receives the food after chewing, after we have done the chewing part. And this is a valve which shuts off after the food enters the stomach, because stomach is having a lot of acid, and if it spills over to the food pipe, it will burn up the inside of the food pipe. So Mother Nature has created a valve here, so that the moment the food drops into this, it shuts off and the food is churned inside with the help of acid. This is how it works. Now, with age, this valve gets incompetent and lax, with the result that if we have a heavy meal at 10:30 and straightway we go off to sleep, chances are that this lax wall will allow the food to move upwards. When we are horizontal sleeping like this, the food will travel upwards, backwards into the food pipe. It will burn up the inside of food pipe. It will have a lot of acidity. That is what we call acid peptic diseases. And sometimes, if it is long standing, it might turn into cancerous also. So sitting 2 hours after dinner will help you in various ways. Brushing and mouth cleaning after every meal is very important. Dental hygiene is very important. And if we leave the mouth dirty, then you will have dental issues, gingivitis, pus, and caries tooth. So all those things. So the mouth oral hygiene is very important, especially after every meals. Then if you have the kind of issues that I said, lax valve, in that case, apart from other anti-acid medications, we advise the patients to have the foot end of the bed raised by about a brick, so that there is slanting and the food will not go upwards. So that your treating doctor will tell you. If you are diagnosed by way of endoscopy, the treating doctor will advise you that apart from the medications, you should raise the foot end of the head end of the bed. Water intake, as I said, it has to be just adequate. Lot of water is not going to help unless you have controlled your food. If the food has been loaded with salt and oil and all the junk material, then you'll need more of water. But if your food is okay and balanced, then in general 1.5 ml per calorie consumed is the amount of water that we require, which means about 2 to 3 liters of water is good enough. And as I said, it should be consumed, especially in the night. Daytime, whatever you do, but in the night, it should be done by 7:30 to 8, so that you evacuate your bladder before you go off to sleep and have a peaceful sleep. Water intake will again depend on various factors. If we are working more of outdoors than indoors, we are sitting inside the air conditioned rooms, or we are working outdoors. So it will depend on how much we are sweating. Fever will cause a lot of sweating and evaporation through our lungs also, so we'll require extra water. Then pregnant and nursing mothers, they'll require more of water. Kidney and prostate, as I've discussed.
salty, spicy, sugary diet, caffeinated drinks, they all, alcohol, they all affect the water intake. So that will depend, but in general, the water intake should be just adequate, not more, not less. So with this, we come to the end of eating part. The eating part is done. After that, I'll try to cover a little bit of exercises, and the exercises are in general uh, good for health. And why it is good, I'll come to that later. But most of us, when it comes to exercises, we have 100 excuses. Now the most commonly made excuse is I'm too busy, and those who are too busy, they have to find time for admission into the hospital also, but that they'll not appreciate. One of the participants, he mentioned very well that if you don't run, then you prepare yourself to get admitted also if you don't move. So exercises, people will say that, okay, I'm very busy, I'm not fit, I'm very, very obese. My legs are aching. My knee joint is very painful. My hip surgery. After that, I cannot walk, and variety of excuses. I'm too tired. I work so hard all the day that I really don't feel like walking. And someone will say, I'm not the athletic type. See, those who are athletic type, they can do the exercise. I cannot do that. Someone will say, okay, it's very painful, very harsh. It's very boring. And then, of course, most of the senior citizens will have one single excuse: oh, it's too late now. So these are some of the excuses that we often make while it comes to the exercises. But please try to understand that exercises are an integral part of our day-to-day life. Sitting is the new smoking, which means the the disadvantages or disasters caused by smoking are almost similar to the disasters caused by sitting and doing nothing. So sitting is the new smoking. With exercises, what happens? A lot of hormones are released inside the body, and these are called opium like substances. I'll explain it to you. It will be very interesting to understand. If someone beats up someone with a lathi or something, the first or second stroke, he feels pain. After that, the pain gradually goes away. Why? Because Mother Nature has prepared a system inside our brain that whenever there is pain, the hormone is released into the system, and it is chemically similar to opium, a theme that we commonly understand. And this actually takes away the pain. So the strike is there, but the pain is not felt. Likewise, when we do strenuous exercises, the endorphins, the opium like substances, they are released. They are called happy hormones. So happy hormones are released, and it lifts up the mood of the first thing. It cuts the anxiety. If you are anxious about something, if you are stressed, it will cut the stress and anxiety, and your self esteem will be better. It improves the brain functioning also. Brain functioning means the cognitive function, the memory, the intelligence, the power to remember things or understand or analyze things. They'll be better in those who are doing exercises. And then, of course, if you expose yourself to sunlight, you get a lot of vitamin D. And in general, the cardiovascular diseases or the heart diseases, they are lesser in those who do the regular exercises. It also controls the weight. It reduces the risk of diabetes. And there are various studies which suggest that the cancers of colon and breast, they are also reduced in those who are doing regular exercises. The bones are stronger because every time the muscle contracts, it gives the blood supply to the bones. Bones get their blood supply or the nutrients through the muscles. And the muscles, when they contract, they give a lot of blood to the bone, which is getting a lot of nutrition, and they get stronger. So strong bones and muscles. Muscles, if you have more of muscles, you'll have less of sugar in the blood that we explained. And then if you have strong bones and strong muscles, you'll have less of fall. And if you have less of fall, you'll be
having less of fractures, you'll be having less of chances in staying in bed and having a lot of complications on account of fractures. So the strong bones and muscles are helpful. Then, of course, it improves the ability to perform our daily life activities at the older age, because the muscles are stronger, so we can do our things without assistance from anyone. That said, how to go about it? Go slow. Must consult if you're a patient of diabetes or blood pressure, or if you've had any major health illness, health issues. Please consult your treating doctor before you jump onto the exercises. As I mentioned, the youngsters, they suddenly get very impulsive and they go to gym or start picking up some kind of exercises, and without considering the other factors. So let your treating doctor decide how much of exercise and what kind of exercise is proper for you. Number one. Number two, if you are a diabetic and if you are walking or doing exercises, then you must carry some kind of a raw sugar on you or a toffee or something. And should you feel dizzy or something, sit down and consume that sugar, because there are chances that if you do aggressive exercises, then you might have low sugar. So be prepared for that. Then sustain it. That is very important. You should not do the exercises 1 day, 3 days, 5 days, 5 days, 7 days a week. No, it has to be sustainable. It must be done daily basis. Spread the word, record the progress, spread the word amongst your friends and relatives. Okay, I have started the exercise, please support me. Not that everyone is laughing at you and saying, "Arey, theek hai, bahut kar rahe hain, chhodiye na, bahut ho gaya." No, people must be supportive to you. Make a group of people who can walk with you, brisk walk with you, run with you, do things with you at the exercise level. The kind of exercises which we advise is the best and simplest is walk, brisk walk, and running, swimming, racket games, other games, football, depending on the age and the physical fitness, dancing, swimming. The new exercise that has come up is rucking, having a rucksack filled with heavy materials put on your back and then trying to brisk walk. That will add resistance to your walking. So, rucking is another one. Even if you're watching the TV, try to stand up and watch for at least 10-15 minutes, then sit down. I'll come to the TV part later. Then keep it interesting. New gym, new park, new neighborhood, use the music and things like that. So that way you'll find it less boring. How much of exercise? Aerobic exercises has to be 30 minutes a day, 5 times a week. Now, exercises have to be uh, done in a manner that they burn calories. Now, 5, 7, and 10. This is a very simple calculation. 5 calories per minute of uh, consumption is when we are walking. It is 7 calories per minute when we are brisk walking, and 10 calories per minute when we are running. So if we run for 30 minutes, it is about 300 calories burned. And if we do a simple walking, then probably it is 150 calories burnt in 30 minutes. This is how you can calculate. When we see the diabetic patients, we advise them 1400 calories of diet or 1500 calories of diet and 200 calories of exercise. That means the exercise must be able to reduce 200 out of it by way of burning calories. Now, while walking, how do you know you're doing a proper brisk walk? That is very easy to understand. If you can talk, discuss, or sing while walking, then it is very slow. That means you need to put in more effort and it has to be more brisk. So, this is how you can make out. And any of these exercises should be able to raise your heart rate to more than 110 or 115, around 120. And that should be sustained for 30 minutes. So this is how the aerobic exercises are explained and described. Sleep is very important. Good sleep is important for all of us. It if you are not sleeping properly every day, then that causes sleep debt. You know, the kind of debt we take from the loan from bank. So it's a similar situation. Sleep debt is very important, and it will cause a variety of problems like poor memory,
learning will be lesser, weight gain, your immunity will be poorer, you will be falling sick more often. Safety is another issue. You may fall if you're not having enough of sleep, and especially accidents are there while you're operating the moving machineries, you're driving or you're operating moving machineries. Mistakes can be there, air traffic controllers or even the sisters in the ward. So they have judgment errors, so that may be a difficult situation. Then of course mood will be very irritable, you'll getting angry very often, impatient, fights, inability to concentrate, a variety of things, moodiness, increased stress hormone levels are there, irregular heartbeat. So all these things are related to your improper or inadequate sleep. Now, for good sleep, we say good sleep is earned in the currency of physical exercises. I often come across patients who say, I'm not getting enough of sleep. And I ask them exactly what is your physical activities all the day. And it is very disappointing. Most of the time, we have to tell them that you are not working enough physically. How you expect? Then someone will sleep in the afternoon for a long time and then you'll not get enough of sleep. So, good sleep is earned. Make good physical activities a routine, then only you can have. Then you have to have a sleep cycle. Sleep schedule should be fixed. Whatever you're doing, fix up a time, 10 o'clock, 10:15, 10:30, 9:30, whatever time you fix. You go to bed exactly at the same time every day, come what may. Try to stick to this kind of routine. The bedroom should be very, very dark. It should have no lights penetrating from any side. It should be quiet. It should be free of any gadgets. No mobiles, no laptops, no TVs, no phones, nothing. Remember, bedroom is for only two things, sleeping, and the other thing, you understand what I'm saying. No third thing in the bedroom. So, no over or under eating. You do not go empty stomach, and do not overeat and go to sleep. And daytime naps should be limited. There's a lot of talk about power naps, but then I don't know how it works. If you can limit your daytime naps, that will help in the night sleep. So, good sleep is very important. The next one is consumption of tobacco. Now, tobacco is a part of four things which cause lifestyle diseases. Lifestyle diseases are important to understand at this point of time. See, last century, even last talk also we discussed, the last century was dominated by infections. We had a lot of infections and that killed villages after villages were wiped off because of cholera, diarrhea. You remember those last century in 40s, 30s, 20s, all these things happened. And then 40, around 40, penicillin came and started controlling all the infections. Second war had less of casualties because of this. And by end of the century, we could control most of the infections. What came up was the lifestyle diseases. We increasingly became lazier and lazier. Manual and physical work got to a back burner, and we started sitting and working. There was not much physical activity, and apart from that, the food habits were irregular that we just discussed. Use of tobacco and caffeinated drinks that increased, and that led to bad health. Tobacco is a part of the lifestyle diseases. There are four lifestyle diseases that we count. Number one is, of course, cardiac disease, diabetes, high blood pressure, and stroke. These four have a common factor, and that common factor is unbalanced diet, use of tobacco, low physical activities. Now, all these factors are controllable. They can be modified, which is why they are called lifestyle disease. They are straightway related to our lifestyle. And the lifestyle can be controlled by our own efforts. No medication can work. Tobacco is a part of that, the risk factor. So, use of tobacco will lead to any of these or all of these, which is why it has to be discontinued anytime. Now, many people will say that, okay, I've done it for 40 years, 30 years. There's no point in quitting the smoking or using the tobacco. But here, I want to, through this forum, I want to emphasize that
Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. Sir, sir, Uh, uh, I any suddenly problem? got off. I don't know. Can you still No, hear no, me? no. Oh, We are sir, hearing you yeah, listening, yeah. now. Good, listening. good. Oh, these are technical glitches. Okay. Okay. So I must tell you that 2 hours after quitting the tobacco, the nicotine is out of your system. I think it's getting a noisy a little. Someone still has his mic on. Can we just look into that? Oh, thank you. So 2 hours after stopping the smoking, 2 hours after stopping the smoking, the nicotine is out of your system. 12 hours after stopping, the carbon monoxide is out. You have more air in your lungs and you can expel out more of cough. In 2 days' time after stopping smoking, the sense of smell is better, your tongue can taste food better, and your appetite increases. In 2 months' time, your efficient lungs can help you go upstairs faster, more of phlegm and sputum can come out. In 12 months, the heart disease risk is halved. So you'll have half the risk of what you used to have because of smoking. And in 10 years' time, the lung cancer incidence also goes about half of what you used to have because of smoking. In 15 years' time, the cardiac ailments and stroke risk will be same as non-smokers. So anytime when you decide to quit smoking, it is a good time. Not that it's very late and there's no point in quitting the smoking. I guess I'm very clear. The benefits start immediately after quitting, 2 hours after quitting, the benefits start. In fact, many of the patients who quit smoking, they came up to me and they said that they gained weight, a lot of weight. And we realized that because of good taste that he was having, he was eating more and more, having more of calories. So that is to say that the tongue gets better taste and the smell is better. So the food starts looking more appetizing. Alcohol. Now, use of alcohol, it has to be uh, told in no uncertain terms that alcohol is no good for health. And it is a slippery slope. Moderation is the key. If you must drink alcohol, it has to be limited to 60 grams a day. And then, if you have never drank any alcohol or any hard drinks, there is no point in starting again. Teetotalers should not start any kind of liquor. It can cut on the cardiac diseases, stroke, sometimes gallbladder stones. They can be actually prevented if you stop taking alcohol. And the women who take alcohol, their children, the fetus, the newborn babies are smaller in weight. They may have difficulty in different systems. They may have some diseases, inborn diseases. There are some stories doing rounds that red wine may help, but there are people who will ask that, okay, can I have red wine? Because I have heard or I've read somewhere that red wine can help. But there are other things which can help better, like doing exercises, walking, or having a well balanced diet. So should not jump onto the red wine for benefits. Eye care, I said in the beginning that the eye care is again very important. So for everything, like I've placed my mobile at this point of time, it should be about 12 inches away from your eye. The brightness should be as bright as the room temperature. And there is a rule of 20. Every 20 minutes, look something at 20 feet and look at it for at least 20 to 30 seconds. The rule of 20. Every 20 minutes, look something at 20 feet for 20 seconds. And you must keep blinking your eyes while you are looking into the. So every 20 seconds, try to blink your eyes so that the lubrication is maintained. Otherwise, it will get dried up and you'll have red eyes and variety of other problems. So, and also wash your eyes properly every now and then if you are doing it for a longer time. Reduce your screen time judiciously, especially for senior citizens like us. Reduction of screen time is very important. We must reduce the screen time.
And for TV and other things, we in lighter vein we said that if you switch off the TV and look at it, I think that's the best way to look at the TV. That's it. If you must, then you should stand up for a while watching the TV, and then sit down so that you use some bit of muscles while standing up. Then there are some warning signs, which I mentioned in my last talk, but I'll just quickly run through that because we are at 8:29. So minor ailments like diarrhea, dysentery, chest pain, breathlessness, minor head injuries, sudden blackouts, fits, falls, headaches. So all those things, they should be brought to the notice of the treating doctor. If there is a lump in the breast of suddenly bleeding, there are ulcers which are not healing, or if you are having tingling in the limbs and weaknesses. So they must be brought to the notice of the treating doctor. Thank you very much for a very patient hearing. 8:29. I promised I'll finish at 8:30. And now this forum is inviting everyone to have their doubts and questions. Please make sure that the questions are of general interest, not personal, कि हम दवाई का डायबिटीज का ये दवाई लेते हैं इसका डोज कम करें कि ज्यादा करें, because that will not benefit all of us. So please keep the questions of general interest so that everyone is benefited. Thanks once again for being such good listeners, and all the scholarly people for having given me a chance to share my thoughts on this. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Very good and very nice discussion you have done, no? And every aspect for every organ you have suggested so many valuable advices, no? So we are lucky that we have got a person like you. Okay, Doctor, Akori Maheshwar Prasad, our chief guest, has also come. So, suppose he wants to ask something, he can ask. I will request the Deshmukh Sahab. I will request this Dr. Badani. Dr. Badani is from AIMS, and Pallav Chitij is also from AIMS. He was for 5 years in AIMS, and he has done so many works for cancer. So many agitators in our doctor is also there. Dr. S.M. Bhatt Sahab is also there. Karl Shetty Sahab is also there. So let us start with Akori Sahab. Prasad Sahab, you want to say something? You want to ask something? Prasad Sahab, Akori Maheshwar Prasad Sahab. Akori Maheshwar Prasad Sahab. प्रसाद साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? He's senior government secretary, retired. Prasad Saab, you want to ask something? Okay, in the मैं पूछना चाहूंगा हाँ पूछिए हाँ पूछिए विद्यानाथ झा जी. ड्यूरिंग कोविड टाइम ये कहा गया कि मखाना खाना चाहिए. अच्छा. मखाने के खाने पर जोर दिया गया और इस कारण मखाने का प्राइस शूट अप कर गया है. तो किन किन एलिमेंट्स में ये कारगर होता है, ये जरा कुछ बताना चाहेंगे. मखाना से कोविड ठीक होता है तो किसी स्टेज में कहीं हम लोगों ने पढ़ा नहीं, किसी को कहा भी नहीं. इम्यून सिस्टम को ठीक करता है ये. नहीं ऐसा कुछ नहीं. ये कोई हम लोगों की तरफ से नहीं कहा गया था. ये कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चला होगा. उस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत ज्ञान फैला था, तो ऐसा मखाना में कोई विशेष बात नहीं है. जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स है वो हमने कहा है. अच्छा. डॉक्टर मिश्रा, कुछ नहीं है. डॉक्टर मिश्रा, can you hear me? Yeah. Yeah. Please go ahead. Sir. Badami साहब. थैंक यू फॉर वेरी बहुत ही ल्यूसिड और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था. जो तीन ऐसे तो बहुत सारी चीजों पर आपने टच किया, लेकिन जो तीन मुख्य चीजें हैं, खाना, एक्सरसाइज और सोना, ये जीवन यही तीन चीज बनाती है. मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है. कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज या चीनी हम दो रूपों में लेते हैं. एक तो चीनी जो शुगर केन से निकलता है, जो हम चीनी के रूप में खाते हैं, ये भी प्योर कार्बोहाइड्रेट है और इसमें सुक्रोज होता है. दूसरा जो हम फलों के रूप में खाते हैं, मीठा जो होता है, जैसे कोई भी जो मीठा फल है, तो
ऐसा ऐसा चूंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं, लेकिन आम लोगों के लिए जानना चाहता हूं कि शुगर में सुक्रोज होता है और फलों वाले शुगर फ्रक्टोज मेनली होता है, और इंसुलिन की जरूरत जो है सुक्रोज के लिए ज्यादा पड़ता है। तो क्या डायबिटिक फलों वाला जो मीठापन है, मैं आम और केले की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको पचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, ये सही है जी कि उसका कैलोरी वैल्यू होता है, अगर हम बहुत ज्यादा केला या आम खाएंगे तो वो चीनी के कारण नहीं लेकिन कैलोरी के कारण हमारा शुगर बढ़ाएगा। तो आपका इसमें थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या जी जी, फलों का ये मैंने मीठापन बताया कितना था सेवन जी। करें? फल फल जो है, एक पोर्शन तो उसको खाना चाहिए। और ये फल जो होते हैं, फ्रेश जो ताजे फल होते हैं, तो उनका एंटीऑक्सीडेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जैसा मैंने बताया था कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसके 2 घंटे तक हमारा जो है शुगर लेवल काफी हाई रहता है, और 2 घंटे के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का। तो अगर खाने के 2 घंटे के अंदर में या 2 घंटे के आसपास में अगर हम लोग फल लेते हैं, तो उसमें उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो फ्री रेडिकल्स को क्वेंच करने में मदद करता है। ये एक नंबर 1 हुआ। तो इसलिए खाने के 2 घंटे के बाद अगर फ्रेश फ्रूट्स लें तो अच्छा है। जो डायबिटिक हैं उनको फाइब्रस फ्रूट और जूसी फ्रूट्स में फर्क समझना होगा। तो उनको आम और अंगूर जैसे फल से बचना होगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल जूसी फ्रूट्स हैं, दे आर लोडेड विद शुगर। और जो फाइब्रस फ्रूट्स हैं जैसे अमरूद है, केला, तो इसके पोर्शन छोटे होने चाहिए। आधा या 1/3 आप सेब ले सकते हैं, आधा केला ले सकते हैं, आधा नाशपाती ले सकते हैं, बिकॉज उसका फाइब्रस जो कंटेंट है वो उसके शुगर कंटेंट को या शुगर को जो रिलीज है ब्लड में उसको रिटार्ड करेगा, स्टैगरिंग करेगा। तो सडन स्पाइक जो शुगर का होता है बिकॉज ऑफ वॉट एवर वी टेक इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो स्पाइक्स को रोकने में फाइबर का जो है उसमें काफी योगदान होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जूस ना लेकर के आप होल फ्रूट लीजिए। तो फाइब्रस फ्रूट आप ले सकते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटीज। अगर आप डायबिटिक हैं या रेगुलर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल कैलोरीज जो है उसको कैलकुलेट करके खाना चाहिए। ये नहीं कि आप 1400 ले रहे हैं उसके ऊपर से 200-300 का फिर फ्रूट्स भी ले रहे हैं, वैसा नहीं होगा। और हमने आपको बताया कि कैलोरी जलाने का तरीका कितना है। अगर आप 30 मिनट तक तेज चलते हैं तब जाके कहीं 210 कैलोरी आप जलाते हैं, और अगर आप 4 पूरी खा लेते हैं तो 800 कैलोरी तो ऐसे ही हो गया। तो उस केस में आपको फल फूल की बात करनी नहीं चाहिए। उस समय तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम खा क्या रहे हैं। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है कैलोरी काउंट नहीं करते हैं प्रॉपर, हमने देखा हमारे मरीज बोलते हैं कि बस खाली मटन चावल तो खाए हैं। अब मटन चावल अकेले तो हो गया 1200-1300 कैलोरी, उसके बाद कह रहे हैं कि हम पूरी भी खाए, फल भी खाए, और बाद में हल्ला कर रहे थे कि बिना चीनी का दही नहीं मिला इसलिए ठीक नहीं लगा। साहब बिना चीनी का तब भी चाहे चीनी वाली दही भी खा लेते, फिर क्या दिक्कत था। जब 1400 खा ही लिए तो 200-400 और खा लेते। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना होगा कि आप कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं। खाने के पहले आप देख लीजिए कि आपकी कैलोरीज इंटेक कितनी होनी चाहिए और कितना आप ले रहे हैं। फल जो है उसका एक हिस्सा है, पूरे पूरे प्लेटर का एक हिस्सा है। जूसी फ्रूट्स वो आपको डायबिटिक अगर है तो नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर जी मिश्रा। जी अन्य अन्य श्रोता जो प्रश्न पूछना चाहें। जी। Dr. Deshmukh, you want to ask something? Dr. Deshmukh, you, and we expect some comment from you. Comment also we want to listen on today's discussion on how to be fit Yes, for yes, sir. throughout. Yeah, हाँ correct. हाँ सर बोलिए। हाँ Yeah, sure. ओके, टेल समथिंग देशमुख साहब। Very nice presentation by Mishra sir. थैंक यू। Very nice थैंक presentation by Mishra sir. थैंक यू। And yeah, regarding he talk, can you hear me? यस सर, यस प्लीज सर, यस सर, प्लीज Can गो you अहेड। hear me? यस यस सर, यस यस सर। Hello. या वी आर लिसनिंग, वी आर Hello. हियरिंग। हाँ वी आर हियरिंग। आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, Ah, पूरी अच्छी तरह से आ रही है। so he has nicely explained. He has nicely explained regarding the fiber content, regarding how we should burn our calories, how you should count your food in term of calories. Very nice presentation.
But Thank you. I want Thank you. to ask him two things, two important. Yes, What is please. the role of fasting in maintaining the food material, health, health? And the second Okay. question, nowadays it is told that the probiotics and single cell protein increase your immunity. Is it good for health? If it is good, how much quantity? Number one, the probiotics, actually, we don't need it from outside because the system, Mother Nature has given a system inside our intestines where good bacteria are actually acting all the time, 24/7. They are destroyed only when we use antibacterials to kill the germs which are causing illnesses in our body, like cough, cold, and things like that. And if we are using some antibiotics, they act harsh on those good bacteria, and that might actually require the replacement. But essentially, on a day to day basis, we do not, I repeat, we do not require any probiotics or any vitamins. Our Indian diet is good and complete in all the micronutrients and all the good thing that is required by the body. Fasting as such, I really don't understand how it helps. There are a lot of work going on intermittent fasting and things like that. I'm not sure about that, and to my knowledge, the human body is running under a circadian rhythm, under a system where various chemicals are released at routine and timely intervals to take care of the food intake that we are doing. If we are disrupting that system, obviously we are not doing good to the system. But still, there are people who are propagating the idea. I am not competent enough to comment on that. But I guess fasting for a long time will lead to a lot of acidity, and acid inside the stomach without food will start eating the walls of the stomach, causing the ulcers. So that is my take on that. If we have a long time without food, try to get a fruit or sattu or a glass of lime juice or whatever it is, but give something to the acid for digesting it. It is as simple as that. The acid will come at the regular interval. If it doesn't get anything to digest, then it start digesting itself. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Very nice. Acha, Dr. Jitendra Sinha. Dr. Jitendra Sinha, he has saved my life twice, one heart attack. So, Jitendra Sinha, you want to add something? Dr. Jitendra Sinha, MBBS. डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. जितेंद्र सिन्हा इज विथ अस. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा, डॉक्टर एस.एम. भट्ट, डॉक्टर एस.एम. भट्ट, यू वांट टू ऐड समथिंग? डॉक्टर साहब, हम क्या था एक ये उसमें मेरी डॉटर ने हमको मंगा दिया था ये ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे. ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते हमने 9-10 का पॉइंट आया, 9-10 का मतलब मीटर क्रॉस किया, और उसके बाद हम अचानक मशीन चल रही थी, हम फेंका गए, और फेंकाने के बाद हम बेहोश हो गए. हमको क्या हुआ पता नहीं चला. डॉक्टर सुशील कुमार सिंह थे बगल में, वो आए और फिर बोला कि तुरंत हॉस्पिटल भेजिए. अवेयर आई वाज सेंसलेस, वहाँ बेहोश थे हम. 3.5 घंटा 4 घंटा बाद देखा कि हम पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं. 10-12 डॉक्टर थे और पूरे हमारे हार्ट को पंप कर रहे थे. हार्ट को पंप करने के बाद पता नहीं कहाँ से अचानक होश आया. हम अपने को नए माहौल में, खूब वॉमिटिंग हो रहा था पहले, और उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं. 4 घंटे बाद फिर हमको आए. फिर हम करीब 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहे. ये मतलब 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, मेडी हार्ट यही चीज हम हॉस्पिटल में. बोलना चाह रहे थे. यही चीज हम बोलना चाह रहे थे कि जो एक्सरसाइज है वो ग्रेडेड होना चाहिए और किसी के सुपरविजन में स्टार्ट करना चाहिए. क्योंकि जो ट्रीटिंग डॉक्टर किसी है के सुपरविजन आपके में. जो हाँ, क्योंकि जो आपके बेसिक इलनेस हैं तो उनको कंसीडर करके आपके लिए एक्सरसाइज जो है वो एक
कस्टमाइज किया जाता है कि आप इतना तक कर सकते हैं सेफली, तो सेफ्टी को ध्यान में रख के बताया जाता है। अभी वही मैं बता रहा था कि जो यंगस्टर्स हैं वो लोग अचानक से एक दिन सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा शरीर बहुत खराब हो गया, चलो जिम करते हैं। और जिम वाला इतना उनको समझाते बुझाते हैं और कुछ कुछ खिला विला करके और इतना एक्सरसाइज कराते हैं, जिसने कभी कुछ नहीं किया वैसे लोग अचानक से एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो फिर परेशानी हो जाती है। तो ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इट हैज टू बी ग्रेडेड, इंक्रीज ग्रेजुअली एंड देन सस्टेन्ड, इट शुड नॉट हैव अ गैप। ये बहुत जरूरी है। बहुत जी अच्छा। उमेश जी, और ये उमेश जी कुछ उमेश जी पूछ रहे थे, बोलना चाह उमेश रहे जी। हैं। हाँ जी हाँ, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ जी जी जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं उसी में। एक्चुअली कोविड जो था, कोविड केवल लंग्स का बीमारी नहीं था, कोविड बेसिकली ब्लड वेसल्स की बीमारी थी। और जो पतले जी जी ब्लड वेसल्स थे वो क्लॉटिंग से वो चोक हुए। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने लंग्स पे ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि अचानक ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन हार्ट और अदर ऑर्गन भी, आप लोगों ने उसमें देखा होगा बहुत लोगों को डायबिटीज हो गई थी, यंग यंग लोगों को जी। कोविड के समय। तो हुआ क्या कि कोविड से वो निकल तो गए, और यंग लोग भी जो आजकल अभी सुन रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ और एक्सपायर कर गए, हमारे पास इसका कोई ऑथेंटिक डाटा तो नहीं है, जी लेकिन जी हमारा ऐसा सोचना है कि केवल लंग्स ही नहीं, हार्ट और अदर ऑर्गन की भी जो पतली ब्लड वेसल्स हैं, कुछ शिराएं हैं, वो भी ब्लॉक्ड रही। और उनका जो एक्सरसाइज एक लेवल से ज्यादा जब कर रहे हैं, जैसा कि अभी अमिताभ जी ने बताया कि आप वो नॉर्मल काम तो ठीक कर रहे थे, बाथरूम जाना, खाना खाना, टहलना, लेकिन एक लेवल के बाद जो एक्सरसाइज है वो हमारे शरीर पर एक्स्ट्रा डिमांड बनाता है। और वो डिमांड अगर हमारा हार्ट और लंग्स पूरा नहीं कर सकता है तो उसमें नेचुरली एक मशीन या एक घोड़ा भी जो उतना स्वस्थ नहीं है, उसको अगर हम चाबुक मार के दौड़ाना चाहें तो वो दौड़ेगा नहीं, थक करके गिरेगा। तो ये चीज, एग्जैक्टली। ये मैसेज। अच्छा, दूसरा चीज, आजकल जो बच्चे जिम जाते हैं उनको फूड सप्लीमेंट देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो शरीर को देखने में तो लगता है कि बहुत मस्कुलर बना रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देरी में, मतलब दूरगामी उनके खराब परिणाम होते हैं। तो बच्चों को जो आजकल आप देखे होंगे बड़े बड़े डब्बे मिलते हैं और उसमें बहुत फैंसी एडवर्टीजमेंट होते हैं। हम महंगा भी केवल, होता है। जैसा अभी डॉक्टर साहब मिश्रा ने बताया कि हेल्दी खाना हमारे पास मौजूद है, हमें डब्बे का खाना क्यों खाना है? इतने अच्छे फल है, इतना। और उन्होंने, आप एक प्लेटर वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा लगा कि जी आपके थाली में जो हिस्सा हो वो कौन सा हिस्सा, मतलब अगर हम परसेंटेज में देखें तो 30%, मतलब मैक्सिमम प्रोटीन हो, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हो और थोड़ा फैट हो, तभी बैलेंस फूड होता है। जी तो ये दो चीज हम बताना चाहेंगे कि जिम जाने वाले आप अपने बच्चों को बताएंगे कि प्लीज डोंट यूज दैट सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। उसमें बहुत हार्मफुल स्टेरॉइड्स रहता होते है। हैं जो जो अच्छा नहीं है। उसके कारण उनको बहुत सारी बीमारियां होती है, और शुरू में बॉडी तो अच्छा देखने में लगता है, लेकिन 40-45 साल के बाद वो उनकी लाइफ बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं रह जाती है। थैंक यू, थैंक यू, मतलब ये थैंक सब यू। छोटी छोटी चीजें हैं, बट वी शुड जी take care of. Thank you for adding me also, नहीं नहीं and नहीं, थैंक यू, नो थैंक नो, यू। यू आर ग्रेट मैन ऑल्सो। अच्छा, ये काल शेट्टी साहब पुणे से हैं। काल शेट्टी साहब सर यशदा के डायरेक्टर जनरल। सर हाँ सर, हाँ पूछिए। सर नहीं, बहुत अच्छा सेशंस हो गया। सर ने हर एक पॉइंट पर अच्छे से, बहुत सिंपल इससे बता दिया। एंड थैंक उसके यू, बाद भी बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। थैंक सर, यू। आई एम पर्सनली फॉलोइंग इट एंड आई एम टोटली बेनिफिटिंग विथ दिस। एंड इसके लिए हम अपना सेवा भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो इट सर, क्योंकि समाज के लिए तो करना चाहिए, कि क्योंकि हम फिट रहे तो हम लोगों को ये कर सकते हैं। सर, मैं कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर था सर। मैं ये सब फॉलो करने से मैं पेशेंट, मैं खुद क्योंकि उस टाइम में मैंने जो सीखा सर, कॉन्फिडेंस लोगों को देना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर। करेक्ट। आई वॉज देयर इन दी फर्स्ट
ये जब कोविड आ गया, मैं था सर, मैं मेरे हॉस्पिटल में जाता था, लोगों को बताता कलशेट्टी आपके साथ है, ये भी कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता था सर। और वेरी मेरे को इंपॉर्टेंट। भी कोविड नहीं हो गया, सब लोग डरते थे, अरे साहब तो ऐसे ही जाते हैं, किधर भी जाते हैं। मैं क्लीनिनेस ड्राइव में, मेरा क्लीनिनेस ड्राइव में वेरी भी गुड। मैं रहता था, अरे यार ये कचरा भी उछलते, ये करते इनसे, बट मेरे को कुछ नहीं हो गया सर, क्योंकि ये फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी बात रखी सर आपने, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच थैंक सर। यू, थैंक यू। अच्छा मिश्रा साहब, एक चीज पूछना था कि जैसे आपने बताया कि घी और बटर खाने से नली में वो ब्लॉकेज हो जाता है, नैरो हो जाता है, फिर हार्ट अटैक होता है और हमारे हार्ट के मतलब पंपिंग में डिस्टरबेंस होता है। तो जैसे डॉक्टर भट्ट ने बताया था पिछली बार कि हम लोगों को एक लहसुन रोज सवेरे खाली पेट खाना चाहिए, तो क्या लहसुन से ये ब्लॉकेज जो है नली में, जो ब्लड का सर्कुलेशन जो बंद हो, मतलब कम होने लगता है, ब्लड ऊपर नहीं जाता है सीने पे जहाँ पे जरूरत है, तो क्या ये लहसुन खाने से उससे फायदा होता है? और ये कि क्या ये क्लोरोस्टोल? ये तो अब देखिए, ये तो आयुर्वेद की बात है, इस पर तो मेरा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरे समझ में यही आता है कि आप एक तरफ से आग लगाएं और उसके बाद पानी बाल्टी दे के बुझाएं, उससे अच्छा आग ही न लगाएं। क्यों बाल्टी आग ही डालना नहीं है पानी लगा में? है। लेकिन जब हो गया तो उसके ऐसा बाद क्या क्या करें? ऐसा ऐसा क्या है घी और बटर और नारियल तेल में जिसके बिना जी नहीं सकते हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल। हमको बताइए। लेकिन ठीक है, जब पूरा हो ही पूरा गया। वेस्टर्न वर्ल्ड है, आप देखिए जो विकसित देश है जो पूरा, उसमें कहीं भी बटर और नारियल तेल और घी और वेजिटेबल ऑयल का तो कहीं जगह नहीं है। वो लोग तो सब सिर्फ प्रोटीन खाते हैं। आप कहीं घूम के देखिए, सिर्फ सैलड खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं वो लोग। हार्डली एक आध पीस कभी ब्रेड लेते हैं, नहीं तो, और वो सब फिट हैं, सब लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। और तो जब हो हमारे यहाँ ही गया, एक्चुअली जब हो हाँ, गया तो तो फिर हमारे यहाँ क्या एक्चुअली करें? खाने का निदान। तरीका जो, हाँ नहीं, हाँ खाने का तरीका जो है हमारा गलत है। वो तो बार बार हम बोल ही रहे हैं कि खाने में हम लोग हाँ। जो जिस तरीके से पकाते हैं तेल डाल करके और जिस तरीके से करी बना करके, तो वो खुद अपने आप में ही बहुत गलत है। लेकिन अब वो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, तो इसी से अब ये हो रहा है कि डॉक्टर साहब भी मेरी बात सुन रहे हैं कि हम लोगों ने खुद से ये इंतजाम कर दिया है। पहले कहते थे हेल्थ इज वेल्थ, अब ये हम लोगों ने अपने जीवन शैली के चलते ऐसा कर दिया है कि योर हेल्थ इज माय वेल्थ। तो आपने हमें मौका दिया है कि अपना वेल्थ बनाने के लिए अपने हेल्थ के जरिए आप अपना हेल्थ खराब करते हैं और हम अपना वेल्थ बना रहे हैं। फिर हमको अब सब लोग गालियां भी देते हैं कि डॉक्टर लोग बेईमान हो गया है, बहुत पैसा कमाता है। आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को गाली दे रहे हैं कि आप जो है बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो सामाजिक व्यवस्था है, जीवन शैली है। हम लोगों को अपनी जीवन शैली सुधारना चाहिए और कम से कम अगले जो जनरेशन है, हम लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है, अगले जनरेशन को अच्छी बात बताएं कि संतुलित आहार कैसे करें, जीवन शैली में बदलाव करें, शारीरिक श्रम कैसे करें, टोबैको का इस्तेमाल न करें और तनाव से दूर रहें। अगर ये चार चीज करेंगे तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, इन चारों से हम लोग बच सकते हैं। एकदम सिंपल मैसेज है। अच्छा, डॉक्टर अमरीका फ्रॉम जयपुर, अमरीक जयपुर से ज्वाइन किए हैं। डॉक्टर अमरीक, यू वांट टू आस्क समथिंग? ये दूरदर्शन की न्यूज रीडर भी हैं और बहुत अच्छी ट्रेनर हैं डीओपीटी की। डॉक्टर अमरीक, डॉक्टर अमरीक, यू वांट टू आस्क समथिंग? नमस्ते हाँ, नमस्ते 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 नमस्ते। सर, सभी को हाँ प्रणाम और नमस्ते। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने जी जी सेशन थोड़ा नमस्ते। लेट स्टार्ट किया क्योंकि कुछ होली की पूजा वगैरह का कार्यक्रम था। जी जी जी। हेल्थ की जब बात हो रही थी, मुझे भी थायराइड प्रॉब्लम है और मैं भी एक डाइट के अकॉर्डिंग कोशिश करती हूँ कि संतुलित आहार लो। लेकिन डॉक्टर साहब, होता क्या है कि हमारी डाइटिशियन हमारी शुगर बिल्कुल ज़ीरो करवा देते हैं कि आप शुगर मत लीजिए। जो डाइट प्लान बनाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि यदि आप चाय ले रहे हैं, तो शुगर मत लीजिए। तो एक लिमिट समय तक मुझे शुगर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कब तक शुगर नहीं लूँ? तो यानी मेरे को अपने शरीर में शुगर डालना ही नहीं है। नहीं, ये तो डाइट प्लान तो आपको खुद बनाना है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपको आपको अपनी शक्ति के हिसाब से, ये पूरा जो हमारी बातचीत है,
ये आपको जी, वीडियो अपलोड कर देंगे ये अमिताभ जी, जी, तो आप उसको इत्मीनान से देख लीजिएगा। आपके जी, शरीर जी, के जी, हिसाब जी से सर, आपको कितनी एनर्जी चाहिए और उसके जी, हिसाब से फूड प्लेटर आपको खुद बनाना है डे टू डे बेसिस पे, और उसके हिसाब जी, से करना है। इसमें किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है। आप खुद जी, जी, प्रबुद्ध लोग हैं, आपको खुद से समझ लेना है कि आप एक बार देख लीजिए किस भोजन किस आइटम में कितना कैलोरी है और आपको कितनी कैलोरी चाहिए, और उसके हिसाब से। थायराइड के लिए कैलोरी से कोई लेना देना नहीं। थायराइड की कमी हो, अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो दो तरीके होते हैं थायराइड, या तो ज्यादा काम कर रहा हो या कम काम कर रहा हो। अगर ज्यादा जी, काम कर रहा है तो वजन घट जाता है और शरीर सिस्टम बहुत तेज चलता है, और अगर कम काम करना तो सुस्त हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है। तो हम लोग दोनों के लिए दवाएं देते हैं, आहार से कोई मतलब नहीं है। और आप हाँ अपनी सर, ऐसा कैलोरी ही होता है कैलकुलेट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना खाइए। अगर आप डायबिटिक हैं तब हमारा रोल होता है, हम आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना नहीं खाना। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से कैलोरी कैलकुलेट करके रोज के रोज खाइए आप। जी, जी, जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक अच्छा, यू ओके अमरीश जी। अमिताभ जी, मेरा एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब से, हाँ, जोशी बहुत जी ही फ्रॉम सुंदर, लखनऊ, ही बहुत इज बहुत मास्टर सुंदर ट्रेनर सर ऑफ आपने लेक्चर डीओपीटी। दिया, और इतना इतना सिंपल भाषा में दिया कि सभी लोग, मैं समझता हूँ, समझे होंगे। और अमिताभ जी ने एक और व्यवस्था कर रखी है, जो लेट आते हैं थैंक या यू नहीं ज्वाइन कर पाते, वो वीडियो देख के समझ सकते हैं। सर, मेरा जी। एक क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे कि कुछ लोग, कुछ जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं सर, वो टाइम से इतना वर्क करते हैं, क्लासेस भी लेते हैं मेडिकल कॉलेज में, फिर पेशेंट को भी देखते हैं, लेट आवर्स में भी जाकर वर्क करते हैं, और इमरजेंसी कॉल होती है तो तत्काल अपनी नींद छोड़ के आ जाते हैं। तो एक आम आदमी 7-8 घंटे के बाद काम करने के बाद थक जाता है। तो आम आदमी भी कैसे एनर्जेटिक रहे अधिक समय तक, इसके बारे में 2-3 लाइनें बताएं। और सेकंड सवाल आती है सर, कि कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन है, प्याज है और टमाटर नहीं खाने चाहिए, बल्कि कहते हैं कि हाँ, अगर आप हमारे घर आ रहे हो और अगर आप इनकी डिमांड करेंगे तो मत आइए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों मना करते हैं? पहले दूसरी दो बात पे सवाल आते है हैं। सर। हम लोग लहसुन प्याज टमाटर मना नहीं करते हैं। जी, टमाटर कभी कभी मना करते हैं अगर किन्हीं को कुछ पथरी की शिकायत हो, तो हर बीमारी में अलग अलग उसके डाइटरी प्लान होते हैं। अगर किसी को गाउट की बीमारी है, गठिया की, तो उसमें हम लोग बोलते हैं प्रोटीन मत लीजिए। तो अलग अलग बीमारी पर आमतौर पे जो 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 बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं, तो उनको किसी तरह के मना नहीं है कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए, सब कुछ खा सकते हैं। और दूसरी चीज आप बता रहे हैं कि हम लोग फिट कैसे रहते हैं या आम आदमी फिट कैसे रहे, तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने पिछले 1-1.5 घंटे में की है, उसी से संबंधित था। आप इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिएगा, अगर इसमें लगे आपको कुछ इसमें फॉलो करने लायक है, आप उसको तो आप उसको कर सकते हैं। हमारा ये सोचना है कि 2-3 लाइन में अगर कहा जाए, तो वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि जीवन शैली को बढ़िया बना करके रखें। स्वस्थ जीवन शैली से आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपको शारीरिक श्रम खूब बहुतायत मात्रा में करनी चाहिए। आपको भोजन संतुलित करना चाहिए। आपको तनाव मुक्त रहना चाहिए और तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब आप जीवन शैली की इन 4 बीमारियों से बचे रहेंगे। और ये चारों बीमारियां जो है आजकल काफी ज्यादा बहुत तेजी से फैल रही हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है और कैंसर है। तो ये 4 बीमारियों से अगर बचना है तो जीवन शैली को दुरुस्त करना होगा। और फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, ये चारों चीजें जो है हमारे नियंत्रण में है, हम इनको नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि हम लोग सब कुछ जान के भी इसका नियंत्रण नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य है, और इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लेकर के अवेयरनेस फैलाते हैं। मैं अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाता हूँ, वहाँ मरीजों को अलग से मैंने हफ्ते में एक दिन समय रखा हुआ है कि जितने ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं, उनको बुला के बैठा करके उनको खाने के बारे में, क्या खाना है नहीं खाना है, उसके बारे में अलग से 10 मिनट बताता हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों के बीच अवेयरनेस हो। भोजन एक ऐसा चीज है कि अगर संतुलित आहार न हो तो अनेक बीमारियों को जन्म देता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, जी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। प्रसाद साहब, अकौरी महेश्वर प्रसाद साहब, जो गवर्नमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके, नाउ ही इज 83 ईयर्स ओल्ड और बहुत एक्टिव हैं हमारे वेबिनार में। हमारे चीफ गेस्ट हैं, हम आपका भी बात सुनना चाहेंगे। प्रसाद साहब, कैसा लगा आपको और आपकी क्या प्रॉब्लम है, कुछ पूछिए। देखिए,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। एक वैसे एक दो बार पहले भी मिश्रा जी, डॉक्टर साहब ने बातों को हम लोगों को समझाया था और आज भी दोहराया है। लाइफ स्टाइल की बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन आपने अपना एक केस बताया कि ट्रेडमिल से आपको ट्रेडमिल से आपने एक्सरसाइज जो शुरू किया, उसका वजह यही होगा कि आपने सोचा होगा वॉक करने के बजाय हम ट्रेडमिल पर ही जाएं, लेकिन वो नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। मेरी जो विशेष जो हमारी मजबूरी है वो ये है कि मैं वॉक कर ही नहीं पाता हूँ। तो मैंने भी सोचा था कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से वहाँ ट्रेडमिल की व्यवस्था है, तो ट्रेडमिल का इस्तेमाल करूं, तो उससे कुछ वॉक करने की जो फायदे हैं वो लाभ है वो मिल जाएगा। लेकिन अब तो ये डर लगता है कि वॉकिंग के लिए ट्रेडमिल और ट्रेडमिल का जो रिस्क है वो आपने बताया, तो क्या करना चाहिए वॉकिंग नहीं, के आप लिए? अगर मिश्रा जी ने नहीं, पहले आप बताया था कि वॉकिंग इज बताइए, आप एब्सोल्युटली चल नहीं एसेंशियल। पाते, फिर चल नहीं पाते हैं तो ट्रेडमिल पे क्यों चलना चाहते हैं? ट्रेडमिल में आपके कंट्रोल में तो नहीं रहेगा, फिर वो डॉक्टर अपनी ने तेजी से चलता एकदम मना रहेगा। कर दिया। हाँ, तो हमको आप ट्रेडमिल मना कर ट्रेडमिल आपके दिया। लिए नहीं है। नहीं, ट्रेडमिल तब आपके लिए नहीं है। अगर आप चल नहीं पाते हैं तो फिर ट्रेडमिल में मत कीजिए, लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, जिसमें पिछली बार भी मैंने बताया था। अगर आप फिर हाँ से अगर बताओ। उसको देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, पैर का जो है क्वाड्रिसेप्स जिसको हम बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, अंकल के एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैरों में वजन डाल करके पैर को बैठे बैठे ऊपर उठाइए, नीचे रखिए, ये कर सकते हैं। हाथों में पानी की बोतलें रख के उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। गर्दन का जो है स्टैटिक नेक एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। तो चले बगैर भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग चल नहीं सकते हैं ढंग से, तो उनके लिए कई बार होता है कि अगर वेटलेस एक्सरसाइज करना हो तो स्विमिंग के लिए या पानी में पैर को डुबा करके, नी के जिसके प्रॉब्लम है तो उनको हाइड्रोथेरेपी भी देते हैं। तो तरह तरह के एक्सरसाइजेज हैं। ट्रेडमिल में आपके कंट्रोल में रहेगा नहीं तो आपके गिरने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह से, अब आपका ये व्यक्तिगत है, इसमें इस फोरम के थ्रू आपका डिटेल जाने बगैर मैं कुछ एडवाइस करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने पर्सनल फिजिशियन से बात कर लीजिए और वो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बता देंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि मसल्स का मूवमेंट जरूरी है। अगर आपको शुगर कंट्रोल रहना है तो मसल्स का मूवमेंट जरूरी है, चाहे आप डायबिटिक हो या नहीं हो। शुगर अगर बर्न करना है तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए रेगुलर। जो चलेगा सो बचेगा, जो खड़ा रहेगा उसको भूत नरेटी पकड़ लेगा। अरे, और ये शुक्ला और कौन और श्रीवास्तव जो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये कौन राजू श्रीवास्तव और कौन सिद्धार्थ शुक्ला, इन लोगों का डेथ वही ट्रेडमिल से हुआ। अब हमको डॉक्टर एकदम मना कर दिया। 56,000 का ट्रेडमिल को हम लोगों ने 20,000 में डिस्पोज अप कर दिया, हटा दिया अपने घर से। अब वहाँ से अब उसको हटा करके और फिर उसके बाद डर के मारे अब नहीं, बस अब थोड़ा मोड़ा टहलते हैं। चलिए अच्छा, ठीक है। अब तो हमारे मुझे लगता हम है कि अभी अगर अगर ज्यादा सवाल ना हो तो 9 भी बज गया है, और हाँ क्लोजिंग रिमार्क अगर खान साहब कुछ दे दें तो हाँ, मेरे लिए बस खान आशीर्वाद होगा। साहब, तो खान कुछ साहब का रिमार्क बहुत जरूरी है। दो चार आशीर्वचन दे दें तो हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ जाएगा। और बहुत जो बढ़िया। इसके साथ हम लोग फिर आज क्लोज कर लेंगे। अच्छा ठीक है, बीना पूना से आई हैं, वीना वीना फ्रॉम यशदा, और संतोष रजिस्ट्रार हैं। हम डॉक्टर उमेश जी भी कुछ नहीं पूछे, तो ठीक है, आप लोग को प्रश्न हो तो आप एक एक लाइन पूछ सकते हैं।
अदरवाइज और चंद्रेश्वर बाद में खान चैट साहब की, बॉक्स में व्हाट्सएप में भी हाँ दे सकते हैं, उसको बाद में भी हम लोग देख उसके सकते बाद हैं, में कोई करते दिक्कत हैं। नहीं हाँ, है, देख तो सकते हाँ, हैं। डॉक्टर उमेश कुछ बोलना चाह रहे थे। बोलना नहीं है सर, केवल बस धन्यवाद देना चाह रहे थे डॉक्टर मिश्रा। अरे अच्छा, बहुत थैंक यू, बढ़िया, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक तो यू। चंद्रेश्वर खान साहब से मैं चाहूंगा कि अब आशीर्वाद देखिए, आपका आशीर्वाद बच्चन की चाहत इतने बड़े बड़े विद्वानों को भी है, डॉक्टर मिश्रा जी को भी है, और आज आशीर्वाद बच्चन का लाभ और उसका स्वाद आज हमारे ये डॉक्टर उमेश बदानी साहब भी लेंगे, कि बदानी साहब भी देखेंगे कि डॉक्टर चंद्रेश्वर खान बेस्ट फैकल्टी और अवार्ड विनर ऑफ इंडिया हैं, और टाटा में बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव पोस्ट से रिटायर किया, और कितना आवाज में उनके ताकत और कितना आवाज में उन पकड़ है और कितना आशीर्वाद में दम है, ये देखिए। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी भी आए, बहुत अच्छा लगा। तो चंद्रेश्वर खान साहब, जी, चंद्रेश्वर खान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, डॉक्टर साहब को जितना भी आशीर्वाद दें वो कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सुखद बात ये है कि डॉक्टर साहब को इतने ठीक होने वाले लोग आशीर्वाद देते हैं कि उसका सम टोटल जो है वो उनकी तीव्रता, इनकी भिन्नता, इनका स्पष्ट तरीके से चीजों को बताना और लोगों को बचाना, ये बड़ा हितकारी है। मैं अपने अंतरतम की तमाम गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मानव जीवन की जो आप सेवा कर रहे हैं, स्वस्थ रखने में जो आप मदद कर रहे हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज जिस चीज की कमी है कि बहुत सारे प्रोफेशन जो हैं वो लोक प्रभावित हो गए हैं, लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि सचिव, वैद्य और गुरु जिस दिन कंप्रोमाइज करेंगे उस दिन समाज को बहुत घाटा होगा। आप जैसे लोग, आप जैसे डॉक्टर समाज के प्रहरी हैं। आपको बड़ी खुशी होगी कि मैं आपका जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन है, मैं उसका एथिक्स काउंसलर भी हूँ। आप जैसे लोगों से मिलकर के जो खुशी होती है, और जितना स्पष्ट तरीके से आपने सभी का निदान किया है, वो समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। भगवान आपको बलवंती बनावे और लोगों के चरे बेटी के साथ आप कुछ ऐसा चलें कि संपूर्ण मानवता इसको याद करे, ये मेरा पक्का विश्वास है। और डॉक्टर बदानी का यहाँ आना और भाग लेना, ये भी हम लोगों के लिए खुशी की बात है। डॉक्टर एस के मिश्रा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इसी के साथ आशीर्वाद देता हूँ कि सर, आपकी सारी भावनाएं फलीभूत हों। जब तक भोजन ठीक नहीं होगा और योजन तक लोग चलेंगे नहीं, तब तक कई तरह की गड़बड़ी हम सभी अपने आप में महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब चिकित्सक, वैद्य इस बात को बोलता है तो तब लगता है दूसरे बोलेंगे तो अवैध हो जाएगा। आपका बोलना वैध है, और इस चीज को बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि सा आशीर्वाद। जीवित शरदम सतम, रमित शरदम वसंतम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, आभार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। ये आशीर्वाद वचन सुनने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं। हमारे ग्रुप में जितने भी क्या ये काल शेट्टी साहब, उमेश जोशी साहब, प्रसाद साहब, डॉक्टर अमरीक, डॉक्टर उमेश, पल्लव क्षितिज जी भी आए थे फिर चले गए, डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा, डॉक्टर विद्यानाथ झा, डॉक्टर उमेश, संतोष जी, और वीना, विनय शुक्ला, और भी बहुत सारे लोग, डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा अपने टीम के साथ देख रहे थे इसको, अभी हमारे ग्रुप में नहीं है। और ये सभी लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं। और अगली बार डॉक्टर एस भट्ट बोलेंगे, वो भी डाइट के बारे में आयुर्वेद के तरफ से बोलेंगे, तो हम उसको अगले सैटरडे को सुनेंगे, और हम चाहेंगे कि हम सब कोई फिर से इकट्ठा हों और फिर से इस फ्री कंसल्टेंसी का लाभ ले सकें। और वास्तव में ये प्रिजर्व करने लायक ये है
जितना डॉक्टर साहब ने बताया इसको प्रिजर्व करके बार बार देखें और जब जब जो जो कमी नजर आए उसको पूरा करें। और हम सभी को प्रणाम करते हैं, सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श करते हैं, सभी संतों को, संत की तरह ही हैं आप लोग जो अपने अच्छे बानी से, अच्छे ज्ञान से हमारे दुनिया का आंख खोल रहे हैं। और जब अब ये हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाले का वेब लाइन में भी इसको भेजना शुरू किया है, वो लोग देखेंगे और एक दिन हम लोग का मेहनत रंग लाएगा और एक दिन हम माने हमारे जितने स्कॉलर हैं सबका रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छा होगा। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे वेबिनार के सदस्यों को लंबी उम्र दें और सबका ज्ञान बढ़ाएं और सभी को इनसे लाभ मिलता रहे। प्रणाम, सत सत प्रणाम, चरण स्पर्श। हम लोग फिर अगले शनिवार रविवार को खूब सुंदर सब्जेक्ट से मिलेंगे। धन्यवाद। और हैप्पी होली भी बोल दीजिए सभी को। हैप्पी होली। हाँ, सभी को होली हैप्पी की होली। मंगल कामना। हैप्पी होली टू होली के लिए एवरीबॉडी। सबको प्रणाम प्रणाम जी। सभी को प्रणाम। हाँ, संतोष जी ने आपने कुछ आज बोला नहीं तो बोलना जी चाहिए था। ठीक है, फिर हम लोग जी अगले बार मिलते हैं। जी। हैप्पी होली, होली का हैप्पी शुभकामना हैप्पी होली। और सभी को प्रणाम। थैंक यू। डॉक्टर अमरीक आते रहिए। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।